Yes. So who was speaking? सर मेरा काम जो ऑफिस सुप्रिया सुप्रिया हियर। Yes, Supriya. Yes. हाँ, तो मेरा प्रोफाइल है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। Mm-hmm. तो उसमें मैं कहा एक्चुअली अभी तक मैंने ऑफिस के वर्क में इसको अप्लाई किया नहीं है और मैं यूज भी नहीं किया है। तो Mm-hmm. वेयर आई कैन यूज इट। अच्छा, you are asking me. हाँ, ठीक. आई एम हैंडलिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। You are handling direct indirect taxes. Okay. हाँ। So see, in the direct indirect taxes, you must be having liability assessment, कितना हमको टैक्स पे करना है, कितना हमने पे कर दिया, एडवांस टैक्स, ऑल दीज थिंग्स, राइट? जीएसटी जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग रहता है और टीडीएस रिटर्न फाइलिंग हाँ, इनकम so what you टैक्स। can do is you can import your GST data into Power BI and you can see कि what is the monthly figures, every month हम कितना टैक्स भर रहे हैं, कितना सेल्स हो रहा है, कितना इनपुट आ रहा है, and you ओके। can do the reconciliations also in Power BI. ओके। So that is also Yeah. possible. How this Power BI will be helpful in the reconciliation? Sir, I'll showcase that. मैं बताऊंगा वो वाला चीज, Hmm, hmm. है ना? Once we complete this dashboard, I will be showing how exactly we can do a reconciliation Oh, in Power BI of our GST. wonderful, That I'll be हेलो। showing. wonderful. Yes. हाँ सर, आप जीएसटी का रिको बता सकते हैं क्या, पावर बीआई से कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, चलो ठीक है, बता सकता हूँ। ठीक है, बट आई ओके। अभी क्या है ना, वी हैव अ मिक्स क्राउड, सो आई डोंट नो हाउ ओके। मेनी बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस। ठीक है, बट वी विल डू इट इन वन सेशन कि हाउ टू डू ओके। जीएसटी रिकंसिलेशन इन पावर बीआई। आई विल शो दैट एग्जैक्टली। कराउंड, ओके। इट्स देयर ऑन माय टू डू लिस्ट इन दिस बैच। ओके। ठीक है, एनीवन एल्स हु हैज एक्चुअली tried this thing in their work, at their work or something, या अभी तो हम सीखने वाले फेज में ही हैं? Should I speak, sir? यस सर। Uh, I'm in the process of compiling the data set of my clients, you see, हम्म and I have asked them to give some figures and fill up that statement data set. हम्म। I'm in the midway, you see, ओके ओके। and will definitely this will be helpful in करेक्ट। presenting their data before the client. It will be like an added services. राइट राइट राइट। Right. So definitely it is going to be helpful for everyone, and that was the purpose of actually starting this batch or doing this batch, कि whatever you are learning you should be able to apply it at your work, so it should be of use. ठीक है, अब how we can use it, that depends on our use case, and I'll give you some practical examples also on that. ठीक है चलिए, now let me share my screen and let me show you something. Now, can you see this? Can you see my mail? Mm. Right? Like about Are you able to see my screen? yeah. Correct? Mm. So I recently got one opportunity. It is in the pipeline right now, you know, but the opportunity is around Power BI itself. Okay, मतलब I'll show you the plan, the training. I got a training. This thing. It is a financial modeling training, and I was to create this outline for a 1 day training for a company. I'll tell you the name of the company afterwards. But they want, what they want to do is they want to learn Excel macros, VBA, and Power Query, and then Chat GPT, and then Power BI also. Okay, for their CEO, CFO level reporting and all this thing. And now, do you know which company it is? For which company the requirement has come? It has come just 2 days back. Yesterday I had a call with them, and today they have uh, forwarded this discussion, and tomorrow they are going to close it, and the training is going to happen on 31st. The date is already finalized, but they are just finalizing the content and this training and all. And let me tell you like which company it is.
Now, can you see this name? So Mittal Nippon Steel. ArcelorMittal. Oh, Right. uh, uh, ArcelorMittal Nippon India Steel Plant. sir. Yeah, market leader in steel. Huh? It's a market Yes, leader in steel. Steel exactly. Company. It is a big market one, big leader in big group. steel. Correct. So, Abhi, what I want to showcase is that I'm not like boosting on myself. Okay, I have got this training, but I am just telling you that this is the opportunity, this is the set of opportunity you can get if you know things to that level. अब इनका जो ये है आर्सेलर मित्तल का स्टील प्लांट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डीलिंग इनटू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद देयर सप्लायर्स एंड चेन्स एंड ऑल दीज थिंग्स सो दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ बिगर फाइनेंशियल मॉडल्स कि हम कैसे अमालगमेट करेंगे मर्ज करेंगे एक्वायर करेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स ये ऑलरेडी कर रहे हैं देर आर चार्टेड अकाउंटेंट्स देर आर एमबीएस फ्रॉम आईआईएम एंड टॉप ग्रेड्स पीपल फ्रॉम देयर इंडस्ट्री who are already working in Excel and models and all these things. But having said so, they are not using two things. Number one is Power Query. Number two is macros VBA. Number three is Power BI. ये तीनों चीजें वो नहीं करते हैं इतनी बड़ी कंपनी है बट उनके जो ऑफिशियल्स हैं दोज हु आर इनटू फाइनेंस टीम एंड ऑल दे आर वर्किंग ऑन एक्सेल बट दे हैव नॉट यूज सो फार द Power Query, VBA, scripting, automation, and Power BI. And now they felt that कि यार अब इतने सारी चीजें हमें करनी पड़ती है it is a lot of processes we have to do. How can we automate and how we can save time and how we can present it to a better manner? And somehow they were looking for a trainer on this aspect, and someone recommended my name, and then I got into the discussion, and finally, I'm crossing my fingers. Okay, tomorrow it should get closed. So I'll share my experience if it happens So when I wish you go all, there. so wish you all the best, sir. Thank you, thank you. So it is So, one of the biggest assignment for this year. I already did one big assignment for Tata Refractory Limited in okay. Odisha that I recently did, Uh, uh, and looking for this one. Okay, so this is the one news I wanted to share with you all because I don't consider this as a match. I consider you all as a part of extended family. So जैसे हम ठीक घर में बताते हैं कोई चीज वैसे ही ठीक बात आई एम शेयरिंग इट विद यू ऑल है ना एंड सेकेंडली Best of luck, sir. वन तो मोर गुड ये सब न्यूज सारे जो प्रोग्राम एक दिन में कवर हो जाएंगे सर ये? सर ये यही तो दिक्कत है ना इंडस्ट्री की ये बोलते हैं कि हमारे पास एक ही दिन है ठीक है और ये पता है ट्रेनिंग कहाँ करा रहे हैं ये ट्रेनिंग हाँ, करा रहे हैं लोनावला में सो on मैंने on इनको बोला physical mode, on physical mode. on physical हाँ on physical note so today the HR called me and he had finalized everything वो शायद लोकेशन पूछना भूल गया मेरी है ना he was considering me to be from Mumbai or Delhi or any other metro city Okay. है ना फिर आज मुझे बोलते हैं सर वेयर वुड यू बी कमिंग फ्रॉम अब याद आ रहा है तुम्हें देन आई टोल्ड हिम आई एम बेस्ड इन जयपुर अजमेर तो मैं आजकल बोलता ही नहीं हूँ नहीं तो अजमेर सुन के लोगों को लगता है कि अजमेर से कोई बंदा ऐसा इतना वो प्रोफाइल वाला हो सकता है तो आई डोंट से अजमेर आई जयपुर तो अच्छा फिर बोलते अच्छा ही टुक 1 मिनट टू डाइजेस्ट दिस थिंग ओके यू विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम जयपुर मैंने कहा यस अच्छा ओके ठीक है ओके ओके विल अरेंज सो इट इज लाइक दैट so and one more thing I wanted to share with you all today I got two mails from our CA institute and now I am a empaneled faculty for AI teaching AI in ICAI there is a batch which goes on and it is the most prestigious batch and most remunerative also in the institute. And I have been allotted two sessions for this AI thing, 14th Which and place? Which place? Vadodara, sir, Gujarat. Gujarat. Sir, how many days this course is? Because This is a I three thought that days. I'll also attend. This is a 3 days training. This AI in ICA AI course, and they teach you everything about not everything is possible in 3 days, but you get an idea of how to use AI at different level to this course. So it is a 16 hours, 16. And Murtuza sir, thank you. You were also the participant in the same FDP.
And today I got that confirmation that from amongst the people, they are selecting few. And in the second phase, they will select some more people. So uh, let's see Well, how it goes. Okay, so and very for that, I have to attend one batch in Jaipur first. I will see how the others are delivering, and then I'll deliver. Okay, now coming back to Power BI. Okay, with all these side stories and all these things. Okay, so it was just to motivate you. Okay, that you are in the right direction, in the right hands. So I want you also to develop and become masters in whatever you are learning, but it will take time and efforts. Chaliye. So with this, let me quickly revise what we did yesterday. Okay, and yesterday we did a very interesting thing. I will redo it. Okay, and before I do this, I'll explain what is the difference between a measure and a calculated column or a column. Okay, add column. So everyone go to the sales table, and when you go to the sales table, you will see that we have a quantity, price, sales, cost, profit, GP ratio. Okay. Now suppose I want to add a new column. So to add a new column, what we need to do is either we can go to the Power Query or do the things over there, or there is an option here also of adding a new column. Okay. But to add a new column, we have to write a DEX. Now, if we know how to write a DEX function, we can write. If we don't know, then what we will do? We will learn. Now, even if we don't want to learn, then what we can do? We can use ChatGPT and ask it to write. Okay. So you don't have to even learn how to write formulas. Okay. But let's do this. So what I want to do is I want to categorize my uh, GP ratio into three categories. Okay. If you see the GP ratio, it is showing. See, I will show you. If you click on the GP ratio, it is showing minus 172 40%, and we have minus 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 then positive figures, and it is ranging from the range of minus 170% loss to 32% profit. Can you see that, this range? Now what we want to do is we want to divide zero से कम वाला loss category, 0 से 20% we can say average, and more than 20 we'll say uh, higher profit, less profit or higher profit. ऐसे तीन कैटेगरी में हमको डिवाइड करना है. So this we already did in the Power Query, correct? But how to write a DEX for this? How to write a DEX function for this to do this categorization? ठीक है? Now what we will do is we will use our Chat GPT, okay, to understand how to write this DAX function. Okay. So for that, we have to give a prompt, and the prompt will be what? The prompt will be categorize the gross profit column from my table and add a new column and categorize the gross profit based on if the profit is less than 0%, then you will categorize as loss. If it is between 0 to 20%, you will say average profit. And if it is more than 20%, you will say higher profit or something like that. Okay. So we will write a prompt here. I hope my chat GPT window is visible to all. yeah. Okay. So we'll say uh, generate a DAX function. Now it will understand what is a DAX function. Okay. Yeah, that answer expression. That data analysis right. Expression. For a Power BI dashboard, you can say, okay, wherein in the sales table, okay, there is a column named GP ratio. Okay, GP ratio. What is the name of the column? Gross profit. Okay, so we'll say gross profit. Not we have to use the exact terminology. Gross profit. Okay. So generate a text function or Power BI dashboard wherein the sales table wherein the sales table there is a column named gross profit which has values ranging from minus 170% to 32%.
uh, the DAX function should categorize, no, categorize the GP, gross profit, into three categories based on the below logic. ठीक है? So you will say logic and category. So logic होगा less than 0%, and logic will say GP, gross profit, less than 0%. Category will be loss. Then 0% to 20%, it will be average profit, and more than 20%, it will be highly high profit, something like this. And one correction. So write a DEX function to add a column, okay, because you want to add a new column. To add a new column, ठीक है, in the Power BI dashboard. Okay, so I have written this prompt. Let us see what do we get as a result, and then I'll explain the DAX function rather than writing it and then explaining. So this ChatGPT is a free version or the paid version? So it is a free version. Free version. It will work with all of you. It is a very small function, but we need to understand. Okay, it has given the explanation also. Okay, so now it has not used if, है ना, हमको लग रहा था if यूज होगा, बट यहाँ पे इसने switch यूज करा है. ठीक है, so let me say give the tax using if function in place of switch. So now it has given this if function also. Now let us understand what is the meaning of this. Okay, so it is saying the column name will be what? Perfect category. Okay, so we'll start with switch and then true. So gross profit less than 0, then loss. So ये क्या करेगा? स्विच करेगा, मतलब उस कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेगा. तो अगर जीपी लेस देन 0 आता है तो फिर लॉस कैटेगरी आएगा, है ना. आंसर विल बी लॉस. इफ द जीपी इज बिटवीन 0 एंड 0.2, मतलब 0 से 20% तक. तो यहाँ पर यू व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वेन एवर वी आर यूजिंग अ एंड ऑपरेटर, वी हैव टू राइट डबल एंड, है ना. इट इज अ नोटेशन इन पावर बीआई व्हेन यू आर राइटिंग डैक्स. तो आपको ऐसे लिखना होगा. ठीक है, सो इट इज ग्रेटर देन 0 देन एंड लेस देन 20 देन एवरेज प्रॉफिट, कॉमा, if it is more than 20 then high profit, कॉमा, अनकैटेगराइज्ड, है ना. कुछ ऑप्शंस अगर इनके बाहर चले जाते हैं, कुछ और हो जाता है, तो ऑप्शनल फॉल बैक फॉर अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज, है ना. कहीं पे कुछ एरर आ गया तो वो अनकैटेगराइज्ड करके छोड़ देगा. इसने एडिशनली डाल दिया इसके अंदर. ठीक है, दिस वन ऑप्शन, दिस वन फॉर्मूला. नाउ लेट अस डू दिस, कॉपी दिस. ओके, सर ये डबल एंड क्या बताया था? डबल एंड ये बता रहा था कि जब हमको दो कंडीशन एक साथ मैच मर्ज करनी होती है ना, जैसे हम एंड फंक्शन यूज करते हैं एक्सेल के अंदर. हाँ हाँ. So instead of using the AND function, you are using double AND, this double AND. Because if you use single AND, it will mean something else. It will be like acting as a concatenation. I'll ओके. explain. ठीक है, मैं बताता हूँ इसको. जब हम करेंगे लिखेंगे तो मैं बताता हूँ. Now what we will do is we'll go to the sales table. ठीक है, we'll go to new column and we will simply paste this code. मैं, है ना, आपको ये चैट में भी डाल देता हूँ. If you are able to do that, I'm giving it to the chat as well. एज इट इज पेस्ट कर देना है पूरे फॉर्मूले पे. As it is पूरे फॉर्मूले को पेस्ट कर देना है. ठीक है, स्विच वाले को करें, इफ वाले को करें? सर पहले पहले स्विच वाले से देख लेते हैं, फिर इफ भी करवा दूंगा.
सो हमने यहाँ पे दिया नेम होगा प्रॉफिट कैटेगरी. आई सजेस्ट दैट यू ऑलवेज यूज अंडरस्कोर बिटवीन द नेम. तो नेम ऑफ द मेजर द कॉलम विल बी प्रॉफिट कैटेगरी. देन वी आर यूजिंग स्विच फॉर ट्रू, है ना. अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो ट्रू में हम क्या देख रहे हैं, सेल्स जीपी. अब देखिए यहाँ पर है ना, देर इज अ एरर विच इज कमिंग बिकॉज इट इज शोइंग रेड. नाउ व्हाई द एरर वुड हैव कम, बिकॉज यहाँ पर ये जो है ना सेल्स और जीपी, इज इट टेकिंग द राइट थिंग और नॉट, लेट अस डू. तो व्हाट वी विल डू इज, देखिए यहाँ पर आप सेल्स करके और यू कैन सेलेक्ट द जीपी फ्रॉम हियर. ठीक है. सो लेट्स रीडू दिस सेल्स एंड लेट अस सेलेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट. यहाँ पर भी सेल्स तो ठीक है, वी विल सेलेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. एंड अगेन सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट. एंड नाउ यू सी दैट द रेड पार्ट हैज गॉन. दिख रहा है आपको सर, वो रेड रेड जो लाइन आ रहा था वो नहीं आ रहा है. That means now there appears to be no error. Okay, even if you want to remove this line, uncategorized, we can remove, but let us keep this and I'll press Control Enter. Control enter, Control Enter, yeah, not enter. not Enter. So Enter will actually what will Enter do? It will take you the next line. Okay. तो कंट्रोल एंटर करेंगे तो बाहर आ जाएगा. कैन यू सी दिस कॉलम गेटिंग क्रिएटेड एंड द बाइफर्केशन हैज हैपेंड. जहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे लॉस लिखा आ रहा है, जहाँ पे भी लेस देन 20 वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखा आ रहा है, जहाँ पे भी 40% है वहाँ पे हाई प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है. कैन यू सी दैट? Wonderful, Yes, yes. wonderful. ओके. Hmm. सो दिस इज हाउ यू ऐड अ कॉलम. ठीक है, दिस इज हाउ वी ऐड अ कॉलम and we have written a DAX. Although we have not learned how to write the DAX, but we have used ChatGPT and we have written, but we have understood the logic. What is the logic? Now let's do one more thing. Let's do the same thing using the if function. Again, we will do a add column. ठीक है. And again, we will go to this GPT and we will copy this wala function. ठीक है, if function. See, and we will paste it. Again, you can see the reds on the right hand side. 3 reds आ रहे हैं, मतलब इस लाइन में एरर है ना. Wherever you see a red symbol on the right hand side, that means there is an error in the line. Now, why this error has happened? देखिए जो प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें इशू आ रहा है. यहाँ पर एक्चुअली प्रॉफिट कैटेगरी, ये वर्ड और वो सेम हो रहा है ना, तो इसलिए आ रहा है. ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से व्हाट कैन बी द अदर नेम फॉर प्रॉफिट. Net profit. ठीक है, नेट प्रॉफिट लिख देते. नेट प्रॉफिट कैटेगरी हमने कर दिया. ठीक है. एंड देन वी आर सेइंग इफ. ठीक है, अब मैं समझा भी देता हूँ. इफ ओपन द ब्रैकेट. नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ इंडेंटेशन. हम एक ही लाइन में भी लिख सकते थे, बट टू एक्सप्लेन दिस बेटर it has done like this कि if open bracket and the next line it has saying in the sales table select the gross profit column. So I'm just reselecting this gross profit. And now you see the error has gone from the first line. ठीक है. So can't we correct the mistake here itself by not by resorting to this sales table? Sir, actually what happens is when we are copy pasting the values from the chat GPT, maybe it is covering some characters or it is having some extra space. That is why this Power BI is not able to get it that it is a column inside a table. That is why this error is coming. Okay. So it is better to select this only. We can correct it from this also, but better to do this selection so that it will take the proper thing. It will not take much time, but it will make the things proper. ठीक है. So we have done this correction. Now what it is saying, if
the sales is less than GP is less I than think 0. so because of the spelling of profit, the error is coming because in my case it is not coming. For my in my case, my table name is gross profit. Sorry, your table name is And what? gross profit. You have written as GROFIT. Oh, okay, okay. Grofit कर दिया मैंने. Okay, okay, okay. I Correct. got it. That I is got why it. the error is coming. Oh. In my case, it is not coming. हाँ, but no, I did not write it. I just copied it from here. Okay. यहाँ तो ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बट जो एक मिनट. कॉलम है उसका हेडलाइन सब्जेक्ट वो गलत है स्पेलिंग। अच्छा, ग्रोफिट वो यहाँ कल गलत. से वो कल से वो ऐसे ही आ रहा है। तो आपने कल की नहीं बताया? मुझे लगा कुछ ऐसे ही शॉर्ट लिख रहे होगे आप। सर सर जी, ये मैडम आपको मामू बना रही है। एक्चुअली मैं अपने आप को ना फिट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं हो तो नहीं पा रहा, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रो ग्रो फिट कर दिया रहा, तो प्रॉफिट भी है. ओ माय गॉड. ओ माय गॉड. एनीवेज, इसलिए मैं बोलता हूँ अजम्पशन नहीं रखना चाहिए. अगर आपको डाउट था कि ये क्यों है ऐसा, है ना, तो यू शुड हैव टोल्ड मी देयर इटसेल्फ. यहाँ पे देखिए, ये अभी और कोई भी नहीं बोल रहा है. आई थिंक नो वन इज नोटिसिंग दिस थिंग ओनली कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस. ओह माय गॉड. प्रॉफिट कैटेगरी, ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ तो ठीक है. अब है ना, यहाँ पर हम आते हैं. प्रॉफिट कैट लिख देता हूँ मैं इसको, कैटेगरी को, बिकॉज बोथ द कॉलम्स विल हैव द सेम नेम. ओके, सो आई एम यूजिंग दिस. ओके नाउ, हाँ, तो यू विल नॉट गेट. सो बाकी लोगों को भी नहीं आएगा ना, जिन लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करी है मेरी वाली. आर यू ऑल गेटिंग द, मतलब हैव यू ट्राइड राइटिंग द प्रॉम्प्ट ऑन गेटिंग द रिजल्ट, और व्हाट यू आर डूइंग, कॉपी पेस्टिंग? Okay, now it is clean. Okay, so if the profit is less than zero, then loss. Okay, if again nested if, so if the profit is more than zero, and अब देखिए मैं यहाँ पे अगर सिंगल एंड लगा देता हूँ ना, so what will happen if we try to execute this? It is giving an error. So Kamal, your Yeah. question it was right. Yes, yes. हाँ, so we have to put the double emphasis, and now it will be fine. We are getting the same result. Okay, everyone. So this is the in the DAX function itself we have to use this. So this is Yes, type yes. of, This right? in the dex function. Yes, in the dex function only. Now, let me do one something which I should have done before. Okay. So give the list and explanation of 10 most commonly used DAX functions along with examples. दिस इज व्हाट आई डू व्हेन आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माय नोट्स एंड ऑल. ठीक है, अभी आपको मिल जाएगा, मैं अभी सबको शेयर कर दूंगा ये. ठीक है, एंड वी विल प्रैक्टिस दैट आल्सो. So we got these two categories. This is how we write a DAX function. Now this we have created a column. Okay, we have created a column. We can delete, we can keep both the ones. No, no, no issues in that. But we have categorized this. How we have to use this now? Let me just show you how we have to use this. And yesterday, what I covered is, now I want to confirm with everyone who were not there yesterday. Do you see these three slicers in your slicer section? These are the new addition: tile slicer, list slicer, and text slicer. So those who are not there, can you all confirm this? If you can see this, Amit, Ranjit, छाया मैम, और शिल्पी. शिल्पी आप भी नहीं थे ना कल?
So can you all confirm? Do you see this slicer options? These are the new addition actually. Sir, no, I'm not able to see. You're not able to see. No, sir. Pratiksha also says no. Amit says yes. So how come? So now what you need to do is you need to update your Power BI. Then you will be able to see. And how to update? You have to see, go to settings in the options again, and वहां पे एक ऑप्शन आएगा अपडेट्स का, है ना? तो यहाँ पर यू हैव टू, आई डोंट नो व्हाई मेरा इट्स आई थिंक ऑलरेडी enabled. Okay, when this is enabled you will get notification of RBI updates. Okay, so you have to open this, you have to see that you are getting uh, notifications or your Power BI is updated. And so you will be able to do that. Sir, in my case, it is already ticked, but it is not updated. It is Yes, already there. mine the same case. हाँ, so what happens is it is updating at the back end. आपको दिख नहीं रहा है, आपने मैन्युअली नहीं किया होगा अपडेट, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो गया है. बट सर दिख नहीं रहा ना वो जो आप बट ये जो न्यू बता ऑप्शंस रहे हैं. नहीं दिख रहे सर. अच्छा, नहीं दिख रहे हैं ये आप बोल रहे हो? हम्म. अच्छा, okay. The new option is not visible to you all. Yes. Okay, just a minute. So So what you need to do is you need to check on the Power BI website about the updates, okay? और वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट करने का. Yeah. You will be able to update your Power BI, है ना? ये देखो यहाँ पर है ना, there are so many updates you can see which has happened over the time period. And this is one thing which you should always see. This website powerbi.microsoft.com, it will show you what is new in Power BI, what is the update. जैसे add copilot summaries to Power BI email subscription. So these are the some of the things that they do. Okay, and you can there are some updates which are free, or some will work only with the paid version. ठीक है, ऐसा है. ठीक है, but I'll help you with this, है ना? After the class maybe you can, जिन जिन का नहीं है they can stay back, I'll help you. Okay, so these are some of the updates. Now let us look at what we were doing. So what I have done, I have taken the three categories. Now what I'm going to do is I'm going to create a ribbon chart. I'd explained the ribbon chart earlier also, I guess. Do you remember? नहीं सब नहीं किया, रिबन चार्ट नहीं बनाया कोई. नहीं किया No, था? no. No, no. Okay, okay. Actually I take multiple batches on Power BI. मैंने किसी और बैच में कराया होगा तो, एंड आई डोंट रिव्यू द रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, तो इसलिए आई कीप ऑन आस्किंग कि नहीं हुआ है. चलो कोई बात नहीं, लेट्स डू इट टुडे. ओके, इट इज अ न्यू फीचर फॉर एवरीवन, न्यू टॉपिक आई एम डूइंग. सो रिबन चार्ट, ये व्हाट रिबन चार्ट का डज कौन सा ग्राफ है? दिस विजुअल है? इज, सी दिस इज दिस वन, ये आप देखेंगे ना, होम टैब में इंसर्ट में जाएंगे तो इन दिस इट इज कमिंग इन दिस कैटेगरी ऑफ विच कैटेगरी? line and area. In the line and area, it is the last one, अच्छा, लास्ट वन. ribbon chart, अच्छा अच्छा. and it is very interesting. And abhi I'll show you how. Now, what we will do is, what this ribbon will actually show. If you look at this visual, तो ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बार दिखाई देंगे, है ना, कॉलम चार्ट्स दिखाई देंगे. These are 4 columns, ठीक है? And behind this column, you will see a pattern. You will see a pattern. ठीक है? Now, let's add some data. So on the x-axis, I am adding the Yes. on the x-axis, I am adding the month. Correct? So order date में से हम month ले लेंगे. So on the x-axis, add the month. On the y-axis, I am adding profit, gross profit. ठीक है? इतना ही करते हैं अभी फिलहाल. So what do you see? That the highest profit we have made in the month of August. Correct? And this gross profit column is actually a profit percentage column. ठीक है?
This gross profit is a profit percentage column. So if it is a profit percentage column, it should not have sum, it should have average. Average. अब देखो जैसे ही एवरेज करा तो एवरेज प्रॉफिट इज 8% ओनली, यहाँ पर ही कम है, माइनस लॉस में है, ठीक है। सॉरी लॉस नहीं, 3.77% है। सो यू विल सी सिमिलर बार, और ये एक ऐसा एक यू कैन सी सम वाटरफॉल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, जैसे वो पहाड़ के बीच में से नदी बहती है ना, वैसा टाइप का कुछ बन गया है ये। करेक्ट। नाउ what is this? This is not giving any value addition as such, but it is showing it is similar to this chart. See, I'll show you. Is it similar, something similar to this? Am I right? Hmm. Am I right? Yeah. Okay. बट यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड कलर में कलर कर दिया मान लीजिए, तो आपका ये रिबन जैसा कुछ बन रहा है ना। आई जस्ट शो इट अगेन हियर, ठीक है। थिन बार्स हो गए, रिबन आ गया, बट हियर नाउ इज द गेम। ओके, नाउ इज द गेम। नाउ व्हाट आई विल डू इज, इन द लेजेंड I will add, let's say, product category. अब आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है? कैन यू सी समथिंग डिफरेंट? देर आर 4 colors now. Can you see 4 colors? Hmm. And one category is below the bar, 0% से भी नीचे है, देखो वो category. Can you see this? This is 0% bar. ये बार यहाँ पर x axis जो है 0%, वो यहाँ है. Let me annotate, use annotations. You will be able to understand. This is why, it is one of my favorite charts in Power BI. See, Sir, once again, just put how we have done a different color. yes. Let me redo this. Please. So, I have taken the ribbon uh, chart. Okay, this is a blank chart. Now, what on the x-axis, I am adding the months. So, you will add the month in the x-axis. Can you see the month in the x-axis? I've added the month in the x-axis. In the y-axis, you will add what? Sales. Sorry, profit. ठीक है, या जीपी रेशियो लिया था हमने शायद, सॉरी, वी हैव टेकन जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इंस्टेड ऑफ सम आई हैव टेकन व्हाट? एवरेज. Correct. Now what I did in the legend, I added the category. So this is where we have reached. Are you all with me? Yeah. Right? Now, see, this is the zero axis. This is the zero axis. Okay? तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के नीचे जो भी है वो सब Loss लॉस है, ये पूरा एरिया लॉस है ना। एंड इन दिस लॉस वी कैन सी दिस bars coming for this month. This particular category is into loss, which is this bike category. Correct? Now, what is this? Look at this blue one. Blue one is what? Accessories. So you can see accessories is there at the top. Accessories जो है वो कहाँ पर है? Top of the charts है. Among the 4 categories, which is the category which is having the highest profit margin? Now let me do one thing. Let me add the legends also. है ना, डेटा लेबल भी हम ऐड कर देते हैं। नाउ व्हेन आई पुट द, हाँ अभी यहाँ पे क्या होगा ना, आई कैनॉट ऐड द डेटा लेबल्स। ये टोटल लेबल तो आ गया हमारे पास, ठीक है, डिस्प्ले यूनिट्स कर दिया, ठीक है। सी हियर you are getting 62%, 60%, 65%, ठीक है। If we are seeing the
average, the total profit 62, but average of accessories is 35%. यहाँ पे दिखेंगे 13% है और यहाँ पे दिखेंगे तो क्या है 12% है. Are you able to see? Let me remove the annotations. Now can you see orange one? Average profit देखिए, average of GP कितना आ रहा है 12%. Correct? Now can you see 13%? And can you now see 35%? और इन तीनों का टोटल क्या है 62%. Now, what is happening with the purple one? What is the purple? Purple is the component. So, component was on second position in the January month. It came to the third position in the February month. It again came back to second position in the March month, stayed there in the second position in the April month, but it came back again to the third position in the June month. And then again, it stayed back in the second position. So it is showing the ranking of the different categories amongst the different month. Can you see that? ये जो orange category clothing except being on the second position in the February and June, it is always at the third rank. देखो ranking भी दिखा रहा है. If you look at this, it is showing that January clothing rank is 3 and February clothing rank is 2. Can you see that? And there is a change in rank +1. Yes or no? Similarly, when I come to the March month, can you see that clothing rank in February was second, and in March it has come third. So it has become -1, one rank below. Similarly, if you see this, it was ranked fourth. In April, it was ranked 4. In May also, it is ranked 4. In June, it is maintaining the consistency. कितना consistent performance है बाइक्स कैटेगरी का. Can you see that? Now, let me do something interesting. So, we will add a slicer. अच्छा, कल हमने देखा था कि अभी स्लाइसर में एक नया स्लाइसर आ गया विच इज अ टाइल स्लाइसर. ठीक है. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, you will get something like this. Now let me add country to it. Now do you see all the countries? Australia, Canada, France, Germany, UK, US. Okay. Now now let me add, let me click on any one country. बताओ कौन सी कंट्री पे क्लिक करें? Which country should I select? Anyone? कुछ भी करिए, just click France. France. Okay. Now do you see the chart changing? So what has happened in France? The accessories is on top in the maximum month, but what has happened to the components? They were in second position, then third, then second, then third, and all. Bike is maintained at the last position only. वो फोर्थ नंबर पे चल रहा है फ्रांस में. Now, if we come to Australia, so similar performance you will see in Germany. You will see similar performance. ठीक है. अब आप देखेंगे ये ऑरेंज वाला जो बार है ना वो थोड़ा कम हो गया. That means this clothing segment is very minimum GP margin or sales in this particular country, Germany. But if you talk about UK, the clothing is having a great market or a better share as compared to others. When all the countries, bike is the accessories is the ruling one. यहाँ पे देखो अलग तरीके का शेप आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलिया में बाइक्स को सबसे ज्यादा नुकसान है 20% इन द मंथ ऑफ जुलाई.
And there is no sale of accessories in the month of July. Can you see that? In fact, अप्रैल में भी नहीं हुआ कोई सेल. So this is how we can do analysis over various factors. Now, those who have joined from the FinCard team, what we can do is we can analyze the fund performance over month. आप फंड का एनएवी लग दो यहाँ पर, ट्रैक कर लो उसको, तो आपको पता पड़ जाएगा कि 4 फंड्स अगर हमने लिए हैं तो कौन सा फंड कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा, कौन सा फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सा सेकंड पे है, कौन सा थर्ड पे है. एंड वी कैन पुल द डेटा फॉर मनी कंट्रोल एंड पुट इट ओवर हियर फॉर आवर एनालिसिस. So how to extract the data from the money control? Is it export? Sir, very simple. Now, let me show that. So, can you see the money control website? But you should have the paid version. Huh? No, no, no. Free. Everything is Free. free right now. Okay. Let me see. I think it will be able to. So, these are the top category funds. है ना? This is the performance over the period. Okay. This is the name of the funds. Now, let's say I want to go for direct plans, regular plans, not direct plans. ठीक है, तो ये आ गया. Now, what I'll do is I'll copy this URL. I'll copy this URL. Okay. And then I will come to Power BI. Okay. Let me insert a new page. Now, this is our Adventure Works project. We'll not disturb this. We'll open a new Power BI window. So, I will open a new blank report. Okay, and you can also try this. Open a money control website and go to the top funds or any other thing and open a new Power BI window. Now this is open. Now what we do get data. In the get data, there is the option of web. Can you see web? Oh, yes. So in the Power BI get data, there is the option of web. We will Web. click on web. Wonderful. So when we click on web, it is asking for URL. Now URL I've already copied. मनी कंट्रोल वाला मैंने वेबसाइट का एड्रेस कॉपी कर लिया था. यहाँ पे आके आई हैव पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड नाउ आई क्लिक ऑन ओके. नाउ इफ द वेबसाइट इज अलाउइंग मी, देखिए ये एरर आ गया, एक्सेस टू द रिसोर्सेज फॉरबिडन. ठीक है, दैट मीन्स दे आर नॉट अलाउइंग टू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम दैट, बट कोई बात नहीं, नो इश्यूज. लेट मी यूज स्क्रीनर and let me put Tata Steel. ठीक है. Now this table I want to use, let's say, let me copy this and I'm just trying to show you how you can get data from the web. So those websites who are allowing, देखिए इसने कर दिया, screener is allowing the access to their data. So this is different from the money control. It is different, sir. It is actually having the company's details, not the mutual fund, I guess. इसमें म्यूचुअल फंड्स आपको नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कंपनी का, कोई भी कंपनी का मिल जाएगा. ठीक है. तो सर इसके अंदर ये पीयर कंपैरिजन है ना सर ये. हाँ, कंपैरिजन है सर. इट Compa- इज शोइंग द चार्ट्स आल्सो ऑफ द शेयर. इट इज शोइंग पीयर कंपैरिजन आल्सो. तो देन पीयर देयर आर सर रिजल्ट. ये कंप्लीट डाटा नहीं आ सकता क्या सर ये वाला. सर कंप्लीट डाटा इस ये टेबल की कॉपी नहीं हो सकता क्या सर सर ये देखिए डाटा सर, डाउनलोड नहीं हो यहाँ पर क्या है ना, चार्ट्स बना है ये, है ना. दिस सकता. हाँ जी. इज द इमेज, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा इन अ विजुअल फॉर्मेट. ठीक है. हम्म. what we are importing is, see, what we are importing is a table. तो ये वाला डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. ये वाला टेबल इंपोर्ट हो जाएगा जो भी डेटा होगा. एंड सपोज यू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट टू एक्सेल, देन यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट एंड यू विल बी एबल टू डू दैट. एंड एक्सेल तो हम ला ही सकते हो, तो हमें पता ही है, बट विदाउट क्रिएटिंग एन एक्सेल कैन वी इंपोर्ट. सो इफ आई क्लिक ऑन टेबल नंबर 1, देन दिस टेबल विल कम. Okay, which is a comparison table. If you click on web view, it will show कि ये वाला टेबल यहाँ से आ रहा है. It is not showing a proper view although.
बट आपको ये व्यू दिखा रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी कम बैक टू दैट व्यू अगेन। एडवाइजर खोज वेबसाइट इज फॉर म्यूचुअल फंड। अच्छा, एडवाइजर खोज, करेक्ट। हाँ, this is also one website, but let us see if it is it is also allowing to do the web scraping. इसको जो हम मैं कर रहा हूँ उसको बोलते हैं web scraping. That means you are taking the data from any website and you are trying to pull it, है ना। यहाँ से हमने लिया टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स और ये लिस्ट आ गई। आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस टेबल, बेसिकली दिस इज माय एजेंडा कि मुझे ये टेबल लेके आना है, फिर कुछ एनालिसिस करने हैं, कुछ विजुअल्स बनाने हैं। सो आई विल सेलेक्ट दिस पेज, ओके। और अभी तो हमारे पास ये चल रहा है, ठीक है। लेट मी सेलेक्ट वन टेबल। मैं ये वाली टेबल मान लीजिए मुझे लेना है। ये तो इसका सेल्स डेटा है, ये वो है। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट दिस थिंग। दिस इज 3 years रिटर्न, दिस इज द बैलेंस शीट, है ना। सो यू विल गेट यहाँ पे सजेस्टेड टेबल भी दिखेगा। सो दिस दे आर शोइंग कि दिस यू कैन टेक दिस, इट इज हैविंग द PNL। ये मान लीजिए ये ले लेता हूँ मैं ना, सपोज आई वांट टू टेक दिस। सो आई कैन डायरेक्टली लोड दिस डेटा और आई कैन गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा एंड इट विल बी टेकिंग यू टू पावर क्वेरी, ठीक है। क्योंकि हेडिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी इसलिए आई वेंट टू पावर क्वेरी, है ना। सो नाउ आई विल से यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। अब देखिए यहाँ पे आ गया दिसंबर, है ना, और भी कॉलम नहीं आ रहे। सो देयर आर सम एरर्स इन दिस राइट नाउ, but let's say we want to import this data, so we will be able to import this data, ठीक है। ये टेबल आपका एज इट इज वेबसाइट से आपने डेटा उठा के आपके पावर बीआई में आप ले आए हैं, ठीक है। नाउ what visuals you want to create, how you want to use that data, that is the next story altogether. But you were able to import the data from a website into your model, or nothing. Not only this, whenever the data is going to be getting updated in the website, it will update in your Power BI also. सो इट इज गोइंग टू अपडेट। जैसे ही ये चेंजेस होंगे वेबसाइट में, ये ऑटोमेटिकली आपका डेटा भी चेंज हो जाएगा। सॉरी, हियर आई हैव गॉट द डेटा, आई थिंक आई हैव इंपोर्टेड द डेटा हियर। अच्छा, इसमें है ही नहीं अभी, ओके। सो नाउ लेट अस सेलेक्ट द एडवाइजर खोज एंड डू फ्रॉम देयर। लेट्स सी इफ वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। सो इट इज ऑल्सो अलाइंग, आई गेस। सो विल से कनेक्ट, and once we are connected, it will show us all the tables which are available to extract the data from। और फिर जो टेबल आपको चाहिए, जो डेटा आपको चाहिए, you can select that data and you can download that data and use it for your analysis। बट कई बार डेटा क्लीन नहीं आता है, आपको डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है। दैट इज वाई पावर क्वेरी इज मोर इम्पॉर्टेंट and we should know how to clean the data or how we want the data in what format and all these things। सर टिकट टेप से भी कर सकते हैं डाउनलोड। हाँ सर, कोई भी वेबसाइट, जो वेबसाइट अलाउ करती ना उससे आप कर सकते हैं। कर सकते टिकट टेप। हाँ हाँ, okay। So by the time it is importing, let us come back to this visual and let me show you what I was doing। So you understood this चलो ये खुल गया है। So this is actually showing the this ribbon chart is used to show the positioning of the accessories। अब मान लीजिए आपको कंट्री देखना है कि ना, हाउ द कंट्रीज आर डूइंग। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल सेलेक्ट दिस चार्ट। इंस्टेड ऑफ लेजेंड पुटिंग द category into legend, we can put the country into legend, ठीक है। And now I'll remove this or we will remove the selection from this। इसको clear कर देते हैं। Now can you see this? Now you will be able to understand it better। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग।
आपको पता पड़ेगा कि कौन सी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बॉटम में है, तो हमारा बिजनेस बहुत कम हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वी आर नॉट जनरेटिंग मच प्रॉफिट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, विच इज द कंट्री वी शुड फोकस ऑन इज फ्रांस. सो फ्रांस हैज बीन ऑन टॉप ऑफ ऑन मोस्ट ऑफ द मंथ्स, कुछ कुछ मंथ्स में परफॉर्मेंस गिरा है, ठीक है. देन विच इज द अपकमिंग कंट्री, कनाडा. कनाडा इज ऑल्सो पिकिंग अप, सेकेंड पोजीशन से फर्स्ट पे गया, फिर वापस सेकेंड पे आया, फोर्थ में भी आया, ठीक है, बट इट इज अगेन पिकिंग अप एंड एंडिंग एट अ हायर नोट. देन यूएस. यूएस हैज बीन एवरेज परफॉर्मर ना. जर्मनी इज नॉट एट ऑल गुड. तो अब इससे आपको पता पड़ जाएगा कि भाई विच कंट्रीज आई नीड टू पुट मोर एफर्ट्स इनटू, एंड देन यू कैन Sir, ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स. जैसे आपने स्लाइसर लगा रखा है, तो स्लाइसर में इंस्टेड ऑफ कंट्री, देन नाउ वी कैन सेलेक्ट द सब कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट. सो इफ यू डू दैट लाइक दैट, अब आपको देखना है कि भैया ये बॉटल कैसे कर रहा है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे आपको उसकी कंट्री की पोजीशन पता चल जाएगी. ये तो फ्लिप साइड हो गया, पूरा पूरा फ्लिप हो गया ये, ठीक है ना. सो ये देखिए, ये जीरो से लेके माइनस, मतलब दिस इज कैप्स. ये तो नेगेटिव नेगेटिव परफॉर्मिंग ही आपका प्रोडक्ट है. सी द लॉसेस वी आर मेकिंग थ्रू दिस प्रोडक्ट्स. सो अगर हम इस तरीके का एनालिसिस, इफ यू शो इट टू आवर क्लाइंट्स, और इफ यू डू ऑन आवर ओन डेटा, सी हाउ व्हाट ऑल वी कैन डू विद दिस. ये तो डमी डेटा है. अगर रियल डेटा पे हम करेंगे तो कितना कुछ हम पता लगा सकते हैं. ओके. नाउ वी गॉट दिस एडवाइजर कोर्स. नाउ इफ यू क्लिक ऑन टेबल 2, देखिए यहाँ पर ये सारे मोतीलाल ओसवाल ये सब फंड्स आ गए हैं, ठीक है. यू गेट द एनएवी ऑल्सो, ये चीजें आ गई, इनके रैंकिंग आ गया है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. सो यू कैन सी दैट it is giving you the headings also. पहले heading नहीं आ रहा था. Now we have the schemes, launch date, AUM, TER, returns. Okay, all these things we are having, the rank and all this. है ना? So suppose you want to import this data, what you can do is you can say transform data, and in the transform data you Cleaning has to be done. do. Cleaning. सो वी नीड टू डू द क्लीनिंग. तो वी डोंट नीड द फर्स्ट रो, क्योंकि यहाँ पे ये ईयर्स लिखा हुआ है, या ईयर्स को आपको ऊपर ले जाना है. नाउ प्रॉब्लम क्या है पता है, वी हैव टू हेडिंग्स. वन हेडिंग इज द ईयर्स, करेक्ट, एंड द सेकेंड हेडिंग इज दिस स्कीम नेम, लॉन्च डेट एंड ऑल दीज थिंग्स, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू एक्चुअली अरेंज द डेटा इन अ प्रॉपर वे, है ना. तो आपको ये फर्स्ट रो तो हटाना पड़ेगा यहाँ पर. सो विल हैव टू से डिलीट द टॉप रो, and then I will shift this to the first, make this first row. So scheme name, launch date. Now date should appear as a date, so we'll convert into a date. Okay, just as a date, not time. Okay, यहाँ पे error आ गया because there were no dates available over here. Okay, so we don't want these errors as well. So you can say remove error. लेकिन आप जब remove error करेंगे तो category average भी चला जाएगा, है ना. These rows will not be there, correct. Then AUM. So it should be number. So we will select crore numbers. तो ये नंबर आ गया. यहाँ पे भी एरर आएगा, ठीक है. TER. Now all these things should be in number percentage. So you can select percentage. ठीक है. So you will get the percentage. ये आपको नंबर चाहिए तो अब नंबर आ जाएगा. अब हो गया क्या चार्ज? तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक है. एंड यू विल पुट द परसेंटेज, ठीक है. यहाँ पे हम डेसिमल कर देते हैं इसको. Okay, here also you can convert into decimal. It is already a number. अब रैंक है, ठीक है. नाउ दिस इज अगेन, it is showing divide by 1 out of 38, 38 out of 38 scheme. These are the first top rank.
So अब मैं if I do it as a number also, so it will give you an error, most probably, most likely. देखिए एरर आ गया, ठीक है. So we cannot do anything. Let's keep it like this only. So this is how you have to clean the data. Once you have cleaned the data, then you will import it into the Power BI, and then you will be able to do various charts or whatever you want to do. वो हम कर. But there are the several blank cells. Yes, sir. So basically, there are several blank cells because the data, the way it has put in the table, it is not structured data. It is semi-structured. Hmm. Now, when I started with this Power BI session, मैंने आपको बताया था कि there are three types of data. One is unstructured, semi-structured, and structured. So this is a mixed data because if you look at the advisor course website, Hmm. if we look at this Hmm. table, so this table is having proper columns here and the rows, but if you see at the last two rows, Hmm. it is having dash, 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 and some numbers here, correct? So where it is this, we are in the Power BI, we are saying this is the date column. Hmm. So it is expecting a date here also, Hmm. and we are not giving any date. Hmm. Here we are saying it is a number, but we are not giving any number. Here we are saying it is a percentage, but we are not giving any percentage. That is why it will give an error. And that is why we have to clean the data before we can. Now, see, this is the table which I've launched, which So we have. will it not create any problem while creating the visuals, these Sorry, blank sir. cells? No, 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 it will not. So I'll show you. Now, let's say we are using this data and let me create a trend chart, something like this. Okay. So what I'm doing is, although this is not related, still I'm trying to add. So we will add the launch date into the x-axis. And then I will use, let's say, return in the y-axis. Now, since every fund will have a different launch date, okay, so it will not show a proper, it will not be a proper. It is showing a count actually, not the this thing. So maybe the return is not a number. Okay, so यहाँ पे देखिए sigma कहीं पे भी नहीं आ रहा है. You cannot see the sigma anywhere, right? So that means these are not treated as a summarized value, the value which we can summarize. Now this we should have summarized. So we'll say, अब देखिए यहाँ पर this written percentage, it is taking as a text. Let me convert this into a number, full number. Now once it is converted into a number, it is once it is converted into a number, it is showing me the sigma, that is the total. Now let me take the return into the chart in the y-axis. Return. Now can you see the graph? Can you see this? Okay, although it has no connection, these are the years which are not coming in sequence. It has no connection, but still, we are able to build something out of it. Okay, so you can build out various tables and all these things, but वो Or data the वैसा वैसा होना चाहिए.